A very good evening to all our viewers. You're watching Evening News Break. I'm Ronak Dey and we start the bulletin with the top focus. The mortal remains of former Assam Chief Minister Tarun Gogoi will be taken to the Srimanta Shankardev Kalakshetra anytime now for the common public to pay their last respects to the departed leader. Meanwhile, top state Congress leaders and party workers paid rich tributes to Gogoi at Rajiv Bhavan in Guwahati. Take a look. Gogoi's mortal remains were brought to Rajiv Bhavan from the Assam Secretariat, which was his office for 15 long years. Earlier, the mortal remains of Tarun Gogoi were taken to his official residence at the Minister's Colony, where his immediate family members, besides a host of others, paid tributes to the departed soul. Son Gaurav Gogoi and wife Dolly Gogoi were seen standing beside Gogoi's body all along, and scores of well-wishers paid their last respects to the departed veteran leader. And the entire Congress top brass, besides a host of ruling coalition leaders, landed at Gogoi's official residence to pay their last respects to the former Assam Chief Minister. Well, let's listen in now, viewers, to some of the leaders and known personalities who dropped by to pay their last respects to Tarun Gogoi. Tarun Gogoi is no more. He has been a political titan in Assamese politics. What is your reaction on this day, sir, today, since he's no more with us? Tarun Gogoi is always, we feel that he is, as leader, he is very much acceptable to all because his style of talking, his behavior, his attitude, everybody admires him. And as newcomer in that time, he blessed me like a son. And he always behaves like my colleague or brother like. He always talk about how to deal with the public, how to talk with the public, how you address your people. He always inspire us and always try to push us to how to deal with the public and how to work with the party. Every time he always with us behave as a like friend. So that's why today it is, you can't express with word that such a leader we lost today. Gogoi, he is no more. Day before yesterday, I went to the GMC to see him. That time, doctors were all busy for dialysis with him. Probably 1 week back, maybe 1 or 8-9 days back, when I met him, he simply asked me, so how is the political situation? What are you doing? How are you? How is your family? Kesham Mahanto was with me at that time. So he's a different type of man. So we never forget him in our life. It is a great loss for the state as well as for the country. नहीं, देखिए, मैं 2001 में विधायक था और उनको मैं गार्जियन के हिसाब से, अभिभावक के हिसाब से मिला था। और राजनीति के अलावा भी
मैं थोड़ा संग्राम के माध्यम से आके विधायक बने थे, तो हमारी उसी समय समस्या थी, बड़ो समस्या। लेकिन उन्होंने इतना रेस्पॉन्स दिया, इतना इनिशिएटिव लिया। 2003 में उन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जन्म देके बड़ो समस्या का हल किया था। और सिर्फ वो अकॉर्ड नहीं, उन्होंने इम्प्लीमेंट तक सब कर दिया था। इसके साथ साथ असम के जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए समाज व्यवस्था को कैसे उन्नत कर सकता है, डेवलप कर सकता है, इसके लिए उन्होंने सोनवाल कोसरी ऑटोनोमस काउंसिल, देवरी ऑटोनोमस काउंसिल, टेंगाल कोसरी ऑटोनोमस काउंसिल, मेस डेवलपमेंट काउंसिल, सोनिया कोसरी डेवलपमेंट काउंसिल, मोरान डेवलपमेंट काउंसिल, सुटिया डेवलपमेंट काउंसिल, आदिवासी डेवलपमेंट काउंसिल, गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल, बहुत सारे ऐसे कदम उठा के ये सब कर दिया था। क्योंकि उन्होंने सिर्फ राज्यों की डेवलप नहीं, उन्होंने समाज के डेवलपमेंट के लिए भी सोचा था, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी सोचा था। और आज उनके कारण यह जाति का अपना जाति के हिसाब से उनके कला, संस्कृति, भाषा, समाज नीति उसको लेकर जीने का एक सुविधा मिला है। He was the tallest leader who represented Assam for the last 50 years, be it the ruling party or opposition party. Since 71, he represented Assam in the Lok Sabha. Then for 3 consecutive terms, he was the Chief Minister of the Assam. And so much water has flown over River Brahmaputra during these 50 years. So much development has taken place, positive and negative. And Gogoji witnessed all. Then he transformed Assam during his tenure as Chief Minister, and Assam got a new lease of life under him. So people of Assam will miss him a lot. Our political party has lost a great leader whom we looked upon for directions at difficult times. And as a whole, the nation, the state has lost a great person. See, I have worked with Tarun Gogoi for about 45 years actively. If we go on talking about his facets and his contributions, I think it will take a longer time. But in a few words, I can say that he was a very rare politician whose simplicity, whose non-corrupt behavior, whose love for the common people, and a genuine desire to improve the lot of the people, irrespective of caste or communities. I think that has paid great dividends not only to the Congress party but also to the state, and I think it left a mark in the administration. His characteristics were so unique for a politician, and I think he was a very basic thing was his honesty and simplicity. Even I saw even the insurgent groups were so hostile and were so offensive in certain matters. They were they believed in him, and that's not a small thing. Well, first of all, personally, I am extremely pained at the passing away of Mr. Tarun Gogoi. As a journalist, I had known him for the past 36 years, ever since I started my career. And when I had written the official biography, Tarun Gogoi, the inside story about blunt politician, that was in 2010, I had about 40 exclusive sessions with him. I think his passing away is, as I have been saying, is not just a loss for the Congress party. It's much beyond that. He was a pan-Northeastern political leader, he was amenable to reason. He was liked by people across the political spectrum, across the social spectrum. He had that acceptability, and I think it will be extremely difficult to fill the void created by his passing away. And he was really a colossal figure, not just in Assam but entire Northeastern region. And of course, I can say that he was one of the tallest leaders even in the Congress party. And he was a staunch Nehru-Gandhi loyalist. And even in 1969, when the Congress party split, he remained with Indira Gandhi. And therefore, Indira Gandhi personally picked him up, handpicked him, and given him responsibilities, very important responsibilities like the AICC Joint Secretary, Letter General Secretary, and so on. And he was, of course, also a minister in the Rajiv Gandhi cabinet. So he's a big loss, not just to Assam, but the entire region as a whole. We have seen a lot of politicians, but very few are statesmen.
I think Tarun Gogoi was a statesman. That set him apart. He listened to people, but he had the ability to take his own decisions. And most importantly, he had the ability to correct himself. For example, electoral politics, it's all a game of numbers. At the end of the day, you are a successful politician only if you can win elections. He won elections for the Congress party 3 consecutive times in a row. In the beginning, in an interview with me, he made that most famous word which became very popular across Assam. He asked me, who is Badruddin? Meaning, he was slighting the AIUDF. He did not want to have an alliance with the AIUDF. But later on, he was pragmatic enough to realize that, yes, if you have to oust the BJP from power, you have to stitch up workable alliances. And therefore, this time, he had no problem with stitching up an alliance with the AIUDF. I think he was one of the most pragmatic leaders, and he was a statesman. And that sets him apart from other politicians, apart from the fact that, he used to make friends easily with people from all ages, and he was extremely accessible and media savvy and media friendly. He was not a typical straitjacketed politician. He had people, he used to visit people, everybody used to meet him. His house was an open place, and his smile. Yesterday, the Assam BJP president Ranjit Das said that his smile will be remembered by the people of Assam for all times to come. I think these are some of the qualities: his endearing personality, his affable nature, his desire to let others meet him and connect, listen to their voices. He used to sing and dance with the young students whenever he visited an educational institution. So these are some of his rare qualities, which we hardly find in politicians these days, who are always ringed with security and do not have their ear to the ground. He had an ear to the ground, and therefore he was different. It is a sad day today for Assam. Assam's longest-serving Chief Minister, Tarun Gogoi, is no more. And today, his body has been brought here at the official residence of the Assam CM within the compound of the Assam Secretariat. As behind me, you can see lots of people have been gathered. Media is gathered. There you can see the coffin, and inside the coffin are the mortal remains of Sri Tarun Gogoi. People are gathered here, mostly politicians and the close family members of Tarun Gogoi are here. As you can see on that side, his son Gaurav Gogoi is also here. Right now, they are all gathered there. People cutting across party lines have gathered here. People from the opposition, BJP, AGP, and several other parties have gathered here. Congress leaders are terming it as almost the loss of a father figure for the other political parties, even among the opposition, such as BJP and AGP. Tarun Gogoi has been a figure that everyone respects, cutting across party lines. And therefore, definitely, we have seen a strong reaction from the people across Assam over the demise of Tarun Gogoi. So yes, definitely today, a political stalwart is no more with us. An era has come to an end in Assam, and Tarun Gogoi has left behind a legacy as one of the most successful chief ministers of Assam, and not just the longest chief minister, but also someone whom everyone respects, irrespective of their party alliances or loyalties. With camera person Jitu, this is Jaydeep Hazarika reporting for Northeast Live. Right, and to bring us all the latest updates, I am being joined now live from the Srimanta Shankardev Kalakshetra by my colleague Sandeep Sharma, who is standing by. जी संदीप, आप अभी फिलहाल श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में हैं. माहौल फिलहाल कैसा है वहाँ पे और तैयारियाँ कैसी चल रही है, संदीप? जी रौनक, यहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पार्थिव शरीर को थोड़ी देर में यहाँ लाया जाएगा वहाँ से और राजीव भवन से, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा जाएगा। और यहाँ पे आम जनता के लिए जो है अब यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आके उनके अंतिम दर्शन और या यूँ कहे तो अपने प्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। रौनक, यहाँ पे अगर राज्य सरकार की ओर से पूरी तैयारियाँ की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी सभी तक नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैं और इस तरह से मैं और आप देख सकते हैं अब यहाँ विधायिका अंगूर लता भी है जो कला क्षेत्र के चेयरपर्सन भी है। उनसे मैं जानना चाहेंगे भाई तरुण गोगोई कुछ हो
কি ক'ব এটা চাওক প্ৰথমতে এইটো আমাৰ বৰেণ্য আমাৰ ৰাজনীতিবিদ বিখ্য ৰাজনীতিবিদ এগৰাকী আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতসকলৰ এই বিয়োগত আমি সকলোৱে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলা সমাজৰ সৈতে তেখেতৰ এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছিলে কাৰণ তেওঁ তিনিটা কাৰ্যকাল তেখেতৰ ইয়াতে সভাপতি হিচাপে আসন অলংকৃত কৰিছিল গতিকে আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ চৌহদতে আজি তেখেতসকলক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইয়াতে আমাৰ দিয়া হ'ব আৰু গতিকে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ তৰফৰ পৰা আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে মই যদিও 4টা বছৰত খুব কম সময় পাইছোঁ কিন্তু যথেষ্টখিনি কিন্তু শিকাৰ আমাৰ বহুত বেছি স্ক'প আছে আৰু তেখেতসকলে প্ৰথম শপত গ্ৰহণৰ দিনাখনৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ আৰু তেখেতে এটা কথা সদায় মই যেতিয়াই পাইছিলোঁ এটা কথা কয় যে সদনৰ মজিয়াত সদায় সৰব হ'ব লাগে আৰু প্ৰতিটো বিষয়বস্তুত ভাগ ল'ব লাগে এই কথাটোৱে বহুত বেছি আকৃষ্ট কৰিছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকলে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থাকি সেৱা কৰিব বিচাৰে ৰাইজৰ মই ভাবোঁ যে অনুকৰণ কৰিলে নিশ্চয়কৈ আগন্তুক দিনত এনেকুৱা এটা ভোটাতৰা হৈ তেখেত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব 4 বছৰৰ অভিজ্ঞতা যে আছিল তেওঁৰ লগত আপোনাৰ মই নিজে আকৃষ্ট হৈছোঁ কোনকেইটা কথা যে এগৰাকী প্ৰকৃত ৰাজনীতিবিদ হ'বলৈ যিকেইটা গুণৰ অধিকাৰ মই ভাবোঁ যে গোটেইকেইটা তেখেতৰ গাত আছিল একটো হৈছে যে মানুহৰ সুখ দুখ ভিতৰত থাকে কিন্তু তেখেতসকলৰ যিটো পজিটিভ যিটো চিন্তা সেই চিন্তা তেওঁৰ অনবৰতে মুখত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হাঁহিটোৰ জৰিয়তে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু সেই হাঁহিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান হওক বা ভাল সময়তে হওক সেই হাঁহিটোৰে তেওঁ সম্ভাষণ কৰিছিল দ্বিতীয়তে এটা আদৰ্শক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাতে বহুতৰ কেতিয়াবা অপ্ৰিয় হোৱা দেখা যায় তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো সুকীয়া আজি আমি এই মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেখেতকে দল বল নিৰ্বিশেষে সকলো সংগঠনৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰিয় ভাজন আছিলে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু তৃতীয়তে জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠলৈকে প্ৰিয় পাত্ৰ হোৱাটো অৰ্থাৎ আপুনি আজি দেখিছে যে বহুত ডাঙৰ ইছ্যু এটা তেখেতসকলে এটা শক্তিশালী এটা তেওঁ মত আগবঢ়াইছে আকৌ সেই পিছ মুহূৰ্ততে আপুনি দেখিব যে আপুনি কোনোবা এখন কলেজত গৈ সৰস্বতী পূজাত গৈ পেলাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত চেলফি লৈছে সুবিধা দিছে এই যিটো সকলোৰে মাজত যিটো তেখেতসকলৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা বা যিটো এটা নৱপ্ৰজন্মসকলে আকৃষ্ট হোৱা তেখেতে যি এটা পৰিৱেশ দি গৈছে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক অন্যতম হয় গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সক্ৰিয়ভাৱে বা প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ কাৰণে নিশ্চয় ক'ম যে এইকেইটা গুণৰ বহুত দৰকাৰ আৰু সেইখিনি তেখেতৰ গাত আছিল আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত যদিও বা সেই মানুহজনক আমি ঘূৰাই নাপাওঁ কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি কৰ্ম তেখেতৰ চিন্তা আমি যিখিনি দেখিছোঁ মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ আগন্তুক আহি থকা বহু নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু যদিও সক্ৰিয় ৰাজনীতিত আহিব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ তেখেতক আদৰ্শ হিচাপে ল'ব পাৰিব जी रौनक आपने सुना कि जिस तरह विधायक अंगुल लता ने कहा कि जो अगर युवा राजनीति है अगर राजनीति में जो आना चाह रहे हैं तो तरुण गोगोई उनके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है उनके लिए मेरे साथ सांसद रानी राणा भी जुड़ गई हैं उनसे मैं भाई হয় খুব মানে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাজনৈতিক গুৰু এজন মোৰ গুৰু আছিলে এইকাৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তেখেত যেতিয়া 96ত সভাপতি হৈছিল তেতিয়া মই 97ত ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলোঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ অসমৰ আৰু দুয়োজনে তেতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ চলি আছিলে এই চৰকাৰখন চলি থকা অৱস্থাত আমি দুয়োজনে প্ৰতিটো জিলালৈ গৈ প্ৰতিটো ব্লকলৈ গৈ আমি যুৱ কংগ্ৰেছৰ মিটিং কৰিছিলোঁ আৰু তাত তেখেতে সহযোগ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত 2001 চনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আমাৰ সফলতাটো আমি দেখিছিলোঁ মুখখন দেখিছিলোঁ সেইটো খুব মনত পৰে এতিয়া আমি সঁচাকৈ এজন নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তি এজনক হেৰুৱাইছোঁ মোৰ গুৰু আছিলে আৰু মই তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ तो आपने सुना रौनक जिस तरह के रानी भी बोल रही हैं कि वो राजनीति के उनके गुरु रह चुके हैं तरुण गोगोई और सिर्फ सांसद रानी नारा ही नहीं बहुत सारे ऐसे नेता जो हैं कांग्रेस के हो तो उनके लिए वो आदर्श स्थापित कर चुके हैं आप देख सकते हैं कि तरुण गोगोई के लिए थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जाएगा और उनके यहाँ से ही अगले 1.5 दिनों तक जो है उनको पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जो आम जनता जो है उनके जितने भी अनुयायी कहें या उनको समर्थक कहें वो आके अपने नेता को श्रद्धांजलि दे सकेंगे रौनक जी बिल्कुल संदीप अभी तो फिलहाल हमारे व्यूअर्स ने सुन लिया कि जो उनके पॉलिटिशियंस जो है जो उनको बहुत करीब से पहचानते हैं उनके बाद उनसे हमारे रिएक्शंस मिल चुके हैं लेकिन संदीप हमें यह भी मालूम है कि अभी वहाँ पे काफ़ी आम जनता भी मौजूद है तो क्या आपकी उन आम जनता से किसी से कुछ बात हुई इस विषय में संदीप हाँ आपने सही कहा यहाँ पे भारी संख्या में आम पब्लिक लोग भी यहाँ पे आम जनता भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे भी जानना चाहूँगा कि तरुण गोगोई जो अब हमारे बीच नहीं है तो उनके
তৰুণ গগৈ নাই এতিয়া কি ক'ব আপুনি? তৰুণ গগৈ নাই এতিয়াতো মনটোৱে বেয়া লাগি আছে থাকিব লাগিছিল এজন শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী তেখেতৰ নিচিনা এজন ৰাজনীতিবিদ আমাৰ মাজৰ পৰা আজি যোৱাকালি চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় লৈ গ'ল মনটো বেয়া লাগি আছে এইখিনি ক'ম কি ক'ব? जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप हमसे इस वक्त जुड़ने के लिए और वहाँ इस कला क्षेत्र की तमाम जानकारियों को वहाँ हम तक पहुँचाने के लिए। And that brings us to the end of our news bulletin, viewers. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching.